Students, in my earlier video lecture, we studied format of project report and how it should be prepared. Now, in this video lecture, we discuss about some tips for effective project report and which task should be followed by an entrepreneur. Okay, so let's start with first slide. Tips for designing an effectual project report for new business. While designing a project report for new business, it is vital to keep the following points. First one is target market. While making a new business project report, it is significant to keep in mind the target market. For example, if you are preparing a report on debt financing, the focus should be on the assurance that the debt can be reimbursed by the company and not on the huge revenues that the firm has occurred. Okay, फर्म हैज़ एक्रूड, जो जमा किए गए पैसे हैं उनमें से उन रेवेन्यू से नहीं बल्कि जो डेप्ट लिया है, मतलब जो लोन जो दिया है वो जो है वो कंपनी कैसे रीइम्बर्स करेगी ये पहले सोचना चाहिए। तो ये एक एग्जांपल दिया है, ठीक है। देन मार्केट अप्रोच, सेकेंड वन मार्केट अप्रोच। The first approach towards preparing business report should be developing and assisting powerful business strategy. Okay, the report should describe the economic trends, clients, and players. Okay, it should also explain on how to perform the chosen approach, the marketing of its products, and functional competence. Okay, सो टारगेट मार्केट हो गया, मार्केट अप्रोच हो गया कि कैसे डेवलप करनी है मार्केट स्ट्रेटेजी। ओके, देन मार्केट राइवरली। An industrial should recognize at what point of time the firm will perform similar activities and when it will do things another way in order to identify its strength and drawbacks. Concentrate on strategies which present you differently from your competitors. Market products differently using various channels etc. ओके, मतलब जो कॉम्पिटिटर्स है ना, राइवल्स है आपकी, तो वो क्या स्ट्रेटेजी अपनाते हैं और आपको कौन सी, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपके वीकनेसेस क्या है ना। हमने देखा स्वॉट में कि स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स। सो ये खुद के पहचानना, दूसरों के भी, मतलब जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनके भी पहचानना और उसके हिसाब से अपने मार्केट ड्राइवर की स्ट्रेटेजी क्या है, सो अपनी क्या होनी चाहिए, ये पॉइंट ऑफ व्यू सामने रख के फिर जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है, बिजनेस रिपोर्ट है, वो बनाना। Okay, and last one, be practical. Catalog realistic plans for there are many unanticipated expenses, price issues, and issues that have been neglected. Hence, predict future trends realistically to make a powerful project report. Okay, so practical होके जो कुछ भी प्लान है वो प्रैक्टिकली सोचना, ठीक है। और जो इश्यूज रह जाते हैं, निगलेक्टेड है, उसके बारे में भी सोचना, क्योंकि फ्यूचर जो है वो किसी ने प्रिडिक्ट नहीं किया है। ओके, सो क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, सो इसके लिए तैयार रहना। और इसके वजह से आपको, मतलब एंटरप्रेन्योर को, पावरफुल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी आनी चाहिए, ठीक है। सो अभी ये प्रोजेक्ट प्रिपरेशन के लिए टाइम कितना लगता है। ओके, टाइम रिक्वायर्ड फॉर प्रोजेक्ट प्रिपरेशन। द लेंथ ऑफ टाइम इट टेक्स टू स्टार्ट अ बिजनेस डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ बिजनेस, द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द बिजनेस एंड द टाइप ऑफ लोकेशन। क्या लोकेशन है, क्या कॉम्प्लेक्सिटीज़ है, मतलब कितनी प्रॉब्लम्स हैं और कौन से प्रकार का बिजनेस है, इसके ऊपर उसका टाइम जो है, उसका लेंथ ऑफ टाइम जो है वो प्रिपेयर होता है, ठीक है।
If you are starting a home based business with just one person, no employee, no bank loan, no products, okay, मतलब कुछ भी प्रोडक्ट नहीं है उसके, so you could probably get started in a month or 2 months. Okay, so at the other end of spectrum, a business that manufacture products in a large facility with lots of employees might take up a year to get started. है ना, 1 साल भी लग सकता है, 6 मंथ भी लग सकते हैं, प्रोजेक्ट के ऊपर डिपेंड है क्या टाइप का बिजनेस है, क्या क्या कॉम्प्लेक्सिटीज़ है और किस प्रकार की लोकेशन है. ओके, अंडरस्टैंड. देन अभी देखेंगे हम टास्क. ओके, so here are some important tasks involved in starting a business and a general guideline for how long they might take. Assuming you are not going to be setting up a business selling products or a retail factory outside of your home. Okay, uh, of course you may be able to shorten the time it takes to start your business if you can juggle of all necessary tasks or if you can find business advisory to help you. Okay, this business startup timeline doesn't include time to prepare documents like a business plan and agreements for business legal types, which are important but not directly related to the startup process. Okay, so ये क्या important task है? So one of the most important tasks in starting a new business is to create a business name and domain name. कौन से नाम से start करना है? Your business name will be on every document, all advertising and marketing materials, and your business websites. Everything you do will be dependent on this name. So take your time and make sure you have the perfect name. Then another task is finding a business location. If you are going to work from home, you can start immediately. If you need a location, it might take 2-3 months to find and lease a space. If you must do renovations, it could take another 6 months or more to occupy the space. Okay, next is starting your website. So getting a phone number, local business license and permit several weeks to a month, depending on whether you must get a variance for a home business or wait for an inspector for permits. Okay, another task is applying for state business registration. For example, LIC, पार्टनरशिप और कोऑपरेशन, क्या प्रकार का बिजनेस है, किसके लिए अपने को रजिस्ट्रेशन करना है. ओके, then about a month including time to meet with an attorney and decide on the business type and details. You can apply for state business registration before you have a final location and make that change later. Okay, मतलब फिक्स नहीं है तो एक लोकेशन दे दो और बाद में फिर जो फिक्स लोकेशन है वो बाद में अपडेट कर लो. ओके, देन गेटिंग योर employer ID from the IRS. You can apply for EIN online and receive the ID immediately. Okay, entrepreneur का जो ID है एम्प्लॉयर का वो आपको मिल जाता है. ओके, then purchase and receive equipments and supplies. Depending on the complexity of your business, this can take several months. You will need a place to put everything, so you must coordinate deliveries with the availability of your business location. And lastly, determining financing needs and search for funding sources. This step can take many months, so you will need to start this process many months in advance of your planned startup. Okay, so 2 tasks take the most time. ओके, ये इनमें से कौन से 2 ऐसे टास्क है कि जो जिसमें टाइम लगता है? एक तो फाइंडिंग लोकेशन फॉर योर बिजनेस एंड टू गेट अ बैंक लोन. ओके, सो फर्स्ट you must decide on a general area, then look around to see what is available, checking on zoning, then negotiation for the lease or purchase of the building,
and then renovating the building to suit your needs. Of course, this assumes that you don't have to build from scratch, which can take many months. Okay, so इसके लिए आपको ज़्यादा टाइम लगने वाला है. Then obtaining a bank loan. To get a bank loan, you must prepare a business plan which includes detailed financial statements, your marketing plan, and information about your management and operations. Putting together a business plan takes time. Okay, इसके लिए भी टाइम लगता है. सो ये दो टास्क है जिसमें टाइम ज़्यादा लगता है. ठीक है. So student, I hope you understand this lecture. If you have any query, then message me in my comment box. Take care and thank you.